Assalamu alaikum. Okay, I am Kashfia Latafat and I am going to present my presentation. Title is A Four-Step Career Plan. Before I'm going to take you to that presentation, I would like to share a little bit of my introduction with you people. I am Kashfia Latafat, a teacher, researcher, lead teacher, mentor, trainer. I have done double masters and BA and PDQ from Cambridge University, and I'm working in this field of education since 18 years. I work with different prestigious organizations and also presented my research papers on different national and international conferences and forums. And I also write for educational magazines. I have my own educational blog, and you can find my research papers on ResearchGate as well. Let's start with the presentation. Okay, you see that why you are all are thinking, viewers, that why I am using this picture with in my presentation. आप सबको इस स्टेज से गुजरना पड़ता है when you are on initial stage of your career and you have many options in front of you, which way we have to go, which is right, which is wrong, what we have to do, which plan we are going to follow. So let's start and see that how we will do that. You see that we have to in a phase that now where we are and where do we want to be in the future. But the question is that how do we get there? Believe me, this how part is really very important. How I reach that point is really very difficult question which you ask yourself several times while you are deciding on your career and how to plan it accordingly to get excel in that, to get success in your life. This how part can be facilitated with the help of your teachers, with your parents, from your siblings, from the people you inspired most, the people around you. These all people are able to counsel you, give you a counseling sessions, give you a support to deal that which path you have to follow to pursue in that specific area, which option you are going to find out, and how to find out again how. So let's further explore a four-step career plan. Believe me, this is just a plan which you are going to plan for according to your need of time, your need, your interests, your uh, areas where you feel motivated. In that way, you have to plan your steps for career development. I take you to the first or initial step which you focused or which make you channelize or which give you a channel to think in that direction, that how you will further improve yourself. Self assessment. Yes, this is the step number one. Who you are, what you want, what are your likes, what are your dislikes, what you like to do, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या नहीं करना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी कौन सी स्किल्स आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं और कौन सी स्किल्स हैं जहाँ आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है. So, in that way, you see that your skills, your interest, your personality, your values, and this is the whole world in front of you. That how you use them in a better way or know yourself, that you will deal with it in a better way. So, let's see. A key to your career management process is self assessment and knowing yourself. At this point, I also like to clear in this moment that career development and career planning are two different aspects which we usually mingle up or mix kar dete hain hum unko. Career planning is the first step where you set your goals, you find out that or objectives, that what are those objectives and goals for your further improvement, and then you will develop those skills according to the need of time, your interest in different specific areas,
to develop yourself in that specific goal, or to where you are going to engage yourself in activities to you will आप objectives को अपने attain कर सकें. So there is a difference, and the key for that is knowing yourself. Now we will check further that what is self-assessment. First, assess your interests, values, and personality to develop an understanding of your technical and transferable skills. What you are and what you also have to be to pursue in specific area. This is the point, और दिस इज द पार्ट जो कि आप खुद अपने तौर पे अपने लिए बेहतर बता सकते हैं, कोई दूसरा आपको असेस इतना अच्छा नहीं कर सकता. कंसीडर फैक्टर्स दैट में अफेक्ट योर सर्च. आपको वो सारे फैक्टर्स देखना है, आपका सिनेरियो कहाँ है, आपकी नीड ऑफ टाइम क्या है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप पाकिस्तान में रह के अपनी कंट्री में सर्व करना है या आपको इंटरनेशनली किसी फील्ड कहीं ज्वाइन करना है. सो इट gives you a different picture. Be aware that assessments cannot define you or tell you what you should do. Instead, that they suggest areas for further exploration and give you a place to begin your research. So let's see the basic 4 components of self-assessment. As we discussed initially, that skills. Many skills are transferable, meaning they can be used across a wide range of industries and functional areas. If you are good with communication, for example, you are good with the communication skills, are valued in all roles, making them highly transferable. It's important to take the time to identify your skills and how those may connect with career options. Then come up to the interest part. Your interest may change as you are introduced to a new areas of study and new experiences. Reflecting on your interest in conjunction with your skills, personality, values is an important step in the self-assessment process. Use the questions below to begin your reflection. What activities do you gravitate towards? What appeals to you about those activities? What issues or causes are important to you? When have when have you been happiest in life, and what were you doing at that moment of time? What classes have been your favorites, and what appealed to you about those classes? Who do you admire most and why? How you are, if you feel that you are inspired with someone, why you are inspired with that someone, and all these what's and when and why. When you reflect back on those questions, it will help you out to focus on the point that what are your major interest areas and even your skills. Now come to the personality. Your unique characteristics influence your thoughts, behaviors, decisions, and how you engage with the world. A perfect job for one person may be totally wrong for another. How much interaction with others do you need in your work? Do you prefer imagining possibilities and being inventive? Or do you enjoy handling practical matters, details, and work that is measurable? So you see that everyone has their own personality. It's been like that. If one thing is possible or workable for one person, then it must be applied to other person. No, you have your own personality. Uh, Values. Making choices consistent with your values is a key component of career satisfaction. Believe me, career satisfaction is really very important thing. Maybe you will enter in a field and but your inner self is not satisfied with this job. You will work 9 to 5. I believe me, you all many people are doing this in their lives. But if your liking is with it, your heart is going with that field, or your career, believe me, you will excel. You will reach the point, the highest point of this area or that work or that option you opted. Take time to define what your values mean to you. For example, the desire to make a difference is often cited as a career related value, but that may look different to each person. Every person has their own skills, interest, personality, values, what type you are having.
you, if you reflect back in the sequence which I am telling you or I'm sharing with you, believe me, you will be able to understand yourself. आप अपने आप को समझ सकेंगे कि who you are and what you want to be and why you want to be do that, what aspects you are thinking that this and that is match with me, ये मेरी personality से match करता है, या I feel that my heart, body, soul, mind is going with this. 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये सारे एरियाज जो हैं वो एक जगह पे हैं या नहीं हैं. सो knowing yourself is the very first step in this area. Okay, you feel that why I'm sharing these kind of pictures? Believe me, these pictures make you focus and come to the point. You people or viewers come take you to that point that you have to think or thinking upon thinking. That is metacognitive skill. कि आप जो सोच रहे थे आप उससे आगे जाके कुछ सोच सकें. आप ये शीप माइंडसेट में अपने आप को फिक्स ना कर लें. डोंट स्टक विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आप मे बी कि आप जो लोगों को अपने जिनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, वो एक शीप मेंटालिटी होती है कि आपको सब ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ. डू यू फील दैट आपके लिए ये बेहतर रहेगा? For this very reason, you need to develop a proper plan according to which you follow that path, and then you will be able to get success in your life. Okay, up till this point, dear viewers, we touched the self assessment area, and with this self assessment area, we come to that research and fit now, and then move towards the action part of that. These all components are really very important in career planning. Believe me. And now I will take you to step two. Okay, so this is the situation which we all in our life somehow किसी एक स्टेज पे हम सब ने ये फेस जरूर फेस देखा होगा कि आइडेंटिफाई एंड रिसर्च ऑप्शंस. बट लकीली अब इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम अदर देन दैट भी सोच सकते हैं. जो हम जिन चीज़ों से हम फेमिलियर नहीं भी हैं हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकते हैं. अब जो माइंडसेट्स हैं इस वक्त और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ या रिसोर्सेज हैं वो अनकाउंटेबल हैं, बहुत ज़्यादा हैं. इट्स अप टू यू कि आप कैसे उनको सर्च करें और कैसे उनको आइडेंटिफाई करें. So step two is doctors and teachers, engineers. These are jobs we know, but there are thousands of other jobs and more created as industries evolve. Explore the range of career options and don't limit yourself to careers with which you are familiar with. आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा देखिए, थिंक आउट ऑफ बॉक्स. एज आई शेयर्ड बिफोर एज वेल दैट you need to develop metacognitive skills, thinking upon thinking. You need to think again and again, reflect back, come to those questions which I just shared with you. This reflection improves you not in just the area of academics, in the working area, the job area, but also in the simple matters of your life. आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप कहीं बहुत एंजॉय करते हैं किसी इवेंट पे एंड किसी पिकनिक पॉइंट पे जाते हैं और आप यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर एंजॉयमेंट एक्टिविटी एंड यू सेड वी विल विजिट दैट एरिया एंड somehow in that after some time again we really enjoyed that. So what is that? You are reflecting on your activity na. In the same manner you need to reflect on your experiences, on your observations, on your academic side, on your working side. So it will really help you to develop better understanding and you will be able to take a quick and right decision at a time according to the need of the time. Learn as much as you can about employers within your fields of interest and trends in the industry. Immerse yourself in publications, websites, and resources used by professionals in that field. Believe me, when you are aware of the community in which you are trying to be a part, आप जहाँ पे जाना चाहते हैं, जो ऑप्शंस आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि आपका आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उस कम्युनिटी से एंगेज हो. एंगेज किस तरह हो? आज सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू आपको हर फील्ड के लोगों से क्या हैपनिंग्स हैं वहाँ पे, क्या हो रहा है, किस तरह रिसर्च टर्न ले रही है, क्या माइंडसेट्स हैं लोगों के, किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, व्हाट स्किल्स यू नीड टू बी देयर. आपको ये सब इंफॉर्मेशन अपने घर बैठे, अपने बेडरूम में, इवन अपने बेड पर बैठे बैठे मिल सकती है, बट यू नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स.
What you have to do further, that conduct career research and gather information from valuable online resources, gather information on different fields, industries and companies, decide on major and learn what career paths a major can offer, conduct informational interviews with people in fields that interest you. Believe me, there are different people in your own environment जिनसे आप inspired होते हैं या inspiration लेते हैं, and you need to talk with them इफ़ यू गेट द चांस। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स भी होते हैं जहाँ प्रोफेशनल्स अपनी वर्किंग स्टाइल्स को, अपनी स्किल्स को पब्लिक के साथ शेयर करते हैं। पब्लिक फोरम्स भी होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहे होते हैं, जैसे कि एक ये ऑप्शन है जो आपके सामने है, अभी आप कैरियर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। The reason is that you explore more opportunities to gain relevant work experience, such as आप एक्सप्लोर इन दैट वे कि आप उसमें डिसीजंस ले सकें, आप ये डिसाइड कर सकें कि आर यू आर दैट पर्सन और यू आर यू हैविंग अ दैट टाइप ऑफ नेचर और पर्सनालिटी टू कूप अप विद दीज द डिफिकल्टीज विच यू विल फेस इन व्हेन you enter in this field. Do you have those skills with you, or what skills you further needed to come to that point? Another thing is explore opportunities to gain relevant work experiences such as internship, summer jobs, or volunteer working. Attend career and networking events as I just shared, career conference आप attend करें। इसके अलावा भी बहुत सारे free of cost ऐसे open houses होते हैं, ऐसे sessions होते हैं, webinars होती हैं, conferences होती हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह बड़े आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें उस शीप मेंटालिटी से बाहर जाना। So in that way, what you have to do, you need to take a first step. For the first step is self-assessment. Dig deeper into it, find out your interest, what you like, what you dislike, what you are, what activities or experiences make you highly motivated, and what further you are interested in it, or why you are interested in it. All again, you see, reflect back again and again. So you back and forth. When you move forward in that way, then if you are more confident and your understanding around different aspects is more clear, your vision will become more clear. You see, this is the picture which has been I just shared कि आप सारी information अपने घर बैठे ले सकते हैं. This has been shared by this year, not this year, this is 2020 by World Economic Forum, and you see that the 20 fastest growing and declining jobs over the next decade. These kind of research reports and polls and pictures and diagrams and graphic presentations make your mindset more clear कि इस वक्त need of time क्या है आपकी, आपको अभी कैसी फील्ड्स में जाने की ज़रूरत है, जहाँ आप अच्छी तरह एक्सेल कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी फील्ड्स जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लूम पे हैं, या आइंदा 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद जब आप वर्किंग फील्ड में आएँगे या आप वर्किंग फील्ड के स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, तो आप कौन सी फर्दर स्किल्स आपको नीडेड हैं जो आप अच्छी तरह एक्सेल कर सकें, अपने अपने आप को मज़ीद अच्छी तरह से लेकर चल सकें। तो आपको यू मस्ट अवेयर योरसेल्फ अबाउट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। आप इन रिसोर्सेज से हेल्प आउट ले सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट के थ्रू आपको पूरी दुनिया की जॉब क्राइटेरिया, ऑप्शंस, कौन सी फील्ड्स बहुत ज़्यादा इन हैं, कौन सी नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्लियर पिक्चर्स आपको नज़र आने लगेगी कि what is the global scenario right now and what you have to decide and what you have to do. आपकी आपका जो एक कहना चाहिए विजन है बहुत क्लियर हो जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाहिए। देखिए, हर जगह पे आपका दिल ये चाहता है, दिल तो बहुत कुछ चाहता है इंसान का, लेकिन आपको बहुत समझदारी के साथ सोच समझ के, नीड ऑफ टाइम, एक्सेप्टेंस आपकी सोसाइटी में कहाँ होगी ये करके आने के बाद फील्ड में आने में, ऑलरेडी ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका हो ये फील्ड के जहां अब मजीद रिक्वायर्ड ही ना हो ऐसे पर्सन्स। लाइक आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जितनी तेजी से अराउंड द ग्लोब पीपल आर वर्किंग, द सिस्टम्स हैज बीन डेवलप्ड इन द एरिया इन दैट वे कि आपके बहुत सारी जो ऑफिस और एडमिन सपोर्ट जॉब्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी और इस डिक्लाइनिंग फेज में जा चुकी होंगी। और जो फास्ट ग्रोइंग एरियाज होंगे वो लोग वहाँ
वहाँ पे आपको एआई एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, डिफरेंट डाटा डेवलपिंग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स रिक्वायर्ड होंगे, एकेडमिक टीचर्स होंगे जो कि अपने आप को कूप अप स्किल्स डेवलप करेंगे कि ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आगे जा सकें। इन दैट वे आप या फिर ऐसे सिस्टम्स, हेल्थ रिलेटेड सिस्टम्स या प्रोफेशंस जो कि आप टेक्नोलॉजी को हैंडल करना जानते हैं, जो टेक्नोलॉजी को हैंडल करके आगे बढ़ सकें। इन दैट वे अब आपकी सिंपल एग्जांपल ये है कि पहले मैनुअल कार्स होती थी, उसमें ऑटोमेटिक गियरिंग आई, उसमें मैनुअल थोड़ा बहुत इन टच रहा, तो आपके पास मैनुअल मैकेनिक्स हैं जो आपके कार्स को रिपेयर करते हैं। बट बिलीव मी, विद इन 10 ईयर्स यहाँ पे जितनी तेजी से स्विचिंग हो रही है, विद इन 10 ईयर्स आई फील कि आपके पास इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। उसके बाद ये जो हमारी मैकेनिक्स हैं, जो लेबर है, ये कहाँ जाएगी? इसी तरह जो असेंबली लाइन पे वर्कर्स दे आर वर्किंग, दे आर नॉट नीडेड आफ्टर 5 और 10 ईयर्स। इतने फास्टली ग्रो कर रहा है हमारे सिस्टम्स, तो वी हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। ये नहीं कीजिएगा आई लाइक दिस एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड विद दिस एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू बी दिस एंड दैट। नो, टेक अ वाइज डिसीजन। स्टेप नंबर 3, इवेल्युएट एंड प्रायोरिटाइज। अच्छा, आपने रिसर्च किया, आपने आइडेंटिफाई किए, उसके बाद ये सिचुएशन है, अब यू हैव मैनी ऑप्शंस इन योर हैंड और हर एक के साथ यू आर गोइंग विद एवरीवन। किसी का आपको कुछ अच्छा लग रहा है, किसी का आपको कुछ आसान लग रहा है, किसी को आपको लग रहा है कि आप यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। This is a step where you need to evaluate and prioritize yourself. If okay, fine, if I have this, तो why I am thinking in this way. कुछ अर्से पहले मैंने स्टीव जॉब की ऑटोबायोग्राफी I read that, and in that I realized कि वो किस तरह काम करता था. He come up to the 100 options in front of him, and then he jotted down to 50 and then 25 and then so on and come to that point कि हाँ उसके पास बेस्ट 3 options आ जाते थे. In best 3 options में then he come with start working with the first option, and believe me, maybe कि sometimes first option work ना करे तो आप second और third को भी try कर सकते हैं. Don't stick to that part कि मेरा तो first option ये था, मैं इसी के साथ go करूँगा. No, think wisely and decide accordingly. The next step is to reflect. Again, you see, reflection, without reflection nothing can be work. It is important to undergo a reality check for each career area you are exploring. Weigh the pros and cons and evaluate how it matches up with who you are and what you want. Use the following questions to guide your reflection. What is your initial reaction to the career field after your research? What appealed to you about the field? What didn't appeal to you? List the pros and cons. What skills, knowledge, or experience will you need to be competitive for entry in this field? Are you interested enough in the field to develop these skills or knowledge? So you need to question all these around the answers around these questions. Then you will be able to identify that what are the best 3 options. And then the part comes that step 4, take action and try options. So sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life. Tiptoe if you must, but take the step. ऐसा ना हो कि आप इस खौफ से कि मैं जी मुझे फेलियर को फेस ना करना पड़े, तो आप एक कोई स्टेप ही ना लें, आप वेट एंड सी कंडीशन में ही रह जाएं. तो यू इन दैट वे यू वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जीज, योर पोटेंशियल, और बस विल बी गॉन. जब आप होश में आएंगे तो बस आपकी जा चुकी होगी, एंड दैट विल बी टू लेट. सो बिफोर टू अवॉइड सच शॉर्टकमिंग्स, आप अच्छा एक चीज़ और इस यहाँ पे मैं कहूँगी कि कोई शॉर्टकट्स नहीं होते. व्हेन यू प्लान, आपको एक आप हम किसी सक्सेसफुल लेडी या मैन को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जी हाँ वाह ज़बरदस्त, मैं भी यहाँ पहुँच जाऊँ. लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उसने कितने स्टेप्स को टच किया होगा जब वो वहाँ गया होगा. कोई एक बूस्ट में, एक जंप में वहां तक नहीं चला जाता, जो कि हमारा एक आइडियल ओकेजन होती है जैसे हम देख रहे होते हैं. आप ये सोचिए कि वो कितने रिगरस वर्क से, कितनी डिफिकल्टीज को फेस करते वहां तक पहुंचा है, उसकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं. आपसे इसीलिए मैंने इनिशियली कहा था स्टेप 2 पे कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हों, उनकी स्टोरी सुने. बिलीव मी, आई स्टार्टेड इनिशियली माई कैरियर एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट.
and then I switch into to the field where I am right now. I started my career as a teacher and I want to be a teacher. Believe me, it's not an accidental kind of thing with me कि जब कुछ नहीं मिला तो teaching कर ली. No, not like that. I planned accordingly. I took the degrees which I feel कि मुझे अच्छा लगेगा, मेरे interest के areas हैं. Then I specialize in the education field. Then आई ग्लोबली एक्सेप्टेंस के लिए मैंने इंटरनेशनल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीडीक्यू किया. एंड देन आई कम टू दैट पॉइंट कि मैं रिसर्च में भी मैं ज्वाइन अप किया. एंड नाउ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग दैट रिसर्च वर्क इन वेरी prestigious organizations like Aga Khan University. Recently I am doing that one project with them. So you see, one small step take me to that point. It doesn't matter कि आपने कहाँ से start किया था. The thing is matter is that how you reflect back and improve yourself side by side. Okay, the golden nugget. I must share this golden nugget. I also applied this golden nugget practice. Still, I'm using this, and I suggest you to move in that way. Reflect and evaluate during and after an experience. Take time to evaluate and reflect. What was enjoyable? What was not? Were there aspects too of the experience that were challenging and aspects in which you excelled? Was it work itself? What is the work itself, or maybe something to do with the people that made it enjoyable? That are you enjoyed that collaborative approach? Believe me, in these days, the whole globe, around the globe, the people are practicing and trying to connecting, and those connections, they develop and grow with each other. आप ऑल अलोन कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते. इवन के आप मार्स पे एक्सप्लोरिंग की तरफ जा रहे हैं, बट बिलीव मी, वहाँ भी आप नासा जैसी इंस्टीट्यूट भी जो है वो अकेले कुछ नहीं कर सका. एंड दे हैव अ जॉइंट वेंचर विद एलॉन मस्क, एंड नाउ दे आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग फर्दर. एक चीज और जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी इज दैट कि अगर आप सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं एंड यू फील दैट यू आर रियली इंस्पायर्ड इन द मिड ऑफ समवेयर इन योर कैरियर, इन योर एजुकेशन प्लान, कि आपको स्पेस साइंसेस में फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, तो यू कैन वर्क. यू कैन, यू सी स्पेस लॉज बन रहे हैं. आप अगर लॉ पढ़ रहे हैं, आप वहाँ लॉ मेकिंग प्रोसेस में, पॉलिसीज मेकिंग में आप जा सकते हैं. आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं. आप इकोनॉमिक ग्रोथ और फैसिलिटेशन के एरिया में जा सकते हैं. आप उनकी कम्युनिकेशन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं. सो चॉइस इज योर्स. अब आप किस तरह अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करते हैं. द गाइडलाइंस आर देयर विद यू. You can go through it again and again. It will be available on Facebook afterwards as well. And believe me, touch this golden nugget again and again. Reflection is the key source in this whole planning. A goal without a plan is just a wish. So don't stick with your wish. Just go for a specific particular plan. So take support from your elders, from your teachers, from your parents. They are having more experience in their lives, and know yourselves. Okay, I would like to conclude my session with this dua Ibrahimi. Rabbi habli hukma, ओ लॉर्ड बेस्टो अपॉन मी विजडम. यानी कि आपको सही और गलत की अकल, समझ और फहम अल्लाह मियाँ से आप ये दुआ करें अल्लाह ताला से कि वो अता फरमाए. ये बहुत बड़ी और जामे दुआ है. और आई यूजली आस्क माई स्टूडेंट्स, माई लर्नर्स टू गो विद दिस. हम अपना लेसन इसी से स्टार्ट या एंड करते हैं. वल्हिकनी बिस्सॉलिहीन एंड एसोसिएट मी विद ऑल दैट इज गुड. ऐसी कोलैबोरेशन, ऐसी वर्किंग एनवायरनमेंट, ऐसे पीपल आपके सर्कल में हों कि जो सॉलिहीन में से हों. वजअलनी लिसाना सिद्क़ी फ़िल आखिरीन and create me for me an honorable reputation amongst people after me. हमारी अल्टीमेट जो वर्कआउट होता है पूरी ज़िंदगी का, वो हम इटर्नल लाइफ के लिए सारी स्ट्रगल करते हैं. तो यहाँ आप अल्लाह से दुआ करेंगे, ग्रांट मी ऑनरेबल मेंशन अमंग्स अदर पीपल. आपको एक अच्छी रेपुटेशन, अच्छी स्टेटस, अच्छा नाम अता फरमाएं. वजअलनी मिन वरासती जन्नतिन नईम. आप एंड मेक मी अमंग्स द इनहेरिटर्स ऑफ द गार्डन ऑफ डिलाइट एंड प्लेस मी अमंग द इनहेरिटर्स ऑफ द ब्लिसफुल गार्डन. आपको जन्नत नईम के वारिसों में से बना दे. बिलीव मी, आप ये दुआ पढ़िए और अपना वर्कआउट स्टार्ट कीजिए. यू विल गेट सक्सेस, डेफिनेटली, इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस. With this,
I would like to conclude and thank you all for being with me during this presentation. And I hope कि अगर कोई एक पर्सन भी इससे कुछ हासिल कर ले तो शायद मुझे भी इसका कुछ वहाँ पर भी मुझे भी कुछ बेनिफिट हो जाए इससे. And I hope कि you enjoyed that and it's really helpful for you, and I'm really thankful to High Flyer Magnets group as well, which provide me this opportunity to be a part of this career conference. Thank you so much. Jazakallah khair. Allah Hafiz.